done? Tell me. Do you know what topic are we going to start or what topic are we going to discuss? Reaction. Anji? Reaction. Which reaction? Redox reaction. Reaction. So what is redox reaction? Both. Please raise your hands who would like to answer. Who would like to answer? Nobody. Who knows the answer? Raise your hand who knows the answer. Nobody. And the reaction in which one reactant got oxidized and other get reduced. That is called redox reaction. Okay, fine. What is oxidation and what is reduction? Oxidation is addition of oxygen and reduction is reduction of hydrogen. Addition of hydrogen. Addition of hydrogen. What's your name? Who's answering? Manik. Okay. So we did this topic redox reaction last time, which is combination of two words. One is reduction and another is oxidation. Reduction means addition of hydrogen or removal of oxygen. हाइड्रोजन के सिवा कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी हो सकता है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मींस which carry positive charge like sodium, potassium, और ऑक्सीजन की जगह कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हो सकता है like chlorine, chlorine, right, which carries negative charge. But in general, this redox reactions, this is also called redox couple because this occurs together always. ये हमेशा साथ में होता है. अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज होती है तो डेफिनेटली समथिंग हैज टू गेट रिड्यूस्ड. वेरी कॉमन एग्जांपल, गिव वन कॉमन एग्जांपल जहां पर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलता है. Any reaction which you know, which is a redox reaction in which something is getting oxidized and something is getting reduced. H2 plus O2. H2 plus O2 gives you H2O. Okay, if I balance it, it should be like 2H2 plus O2 gives 2H2O because your reaction has to be balanced. It follow law of conservation. जितना है उतना ही मिलेगा. You cannot create or destroy anything. It has to be balanced. Now tell me, what is getting oxidized in this reaction? Hydrogen. Hydrogen. So we represent it like this. This hydrogen is getting oxidized. And what is the reason behind it? How can you say that this hydrogen is getting oxidized? What is happening here? Addition of oxygen. So this is called oxidation because you are adding oxygen to hydrogen, right? So oxidation is addition of oxygen. And another reaction that is going on here, what is that? Reduction. Reduction. What is getting reduced here? Oxygen. Oxygen is getting reduced. And how is getting reduced? What is happening in this case? Addition of hydrogen. Addition of hydrogen. So reduction is addition of hydrogen, right? So you got the assignments? Have you got the assignments? Yes. Yes. Well, tell me, would you like to ask about any doubts of yours or any topic which you would like to me to do again? Any question, any doubt, any topic? Or shall we start with the assignment?
Tell me, do you people have doubts? Raise your hands who would like to ask me something. No doubts? Everything is clear? Okay, then let's start with the assignment. If you don't have any doubts. Take out your assignment. Take out the first question, which says, which of the following correctly defines a redox reaction? Hormone oxidation and reduction take place simultaneously. People are very intelligent. So this says a reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously. That is called redox reaction. Right. Second question. Copper powder turns black upon heating due to formation of copper oxide. Which statement justifies the reverse reaction when hydrogen gas is passed? So what is happening here? You have copper powder and it says because of heating, it turns black and forms copper oxide. This is black in color and this happens when you heat it. This delta sign is for heating. So what statement justifies the reverse reaction when hydrogen is passed through it? Means you passing hydrogen. What is going to happen if you pass hydrogen through it? Tell me. What is going to happen? What is called addition of Reduction. hydrogen? That is called Reduction. what is addition of oxygen? Oxidation. So what is happening here? Which process is taking place in this case? Oxidation. The oxygen is getting combined with the copper, so you're getting copper oxide. The process is called oxidation. And one oxygen is getting attached to this copper atom, which is turning it black and forming copper oxide. So when you pass hydrogen through it, what will happen? Reduction. Reduction. And what is reduction? Addition of Hydrogen. or removal of. Oxygen. So क्या बनेगा अगर वो ऑक्सीजन रिमूव करेगा तो ये H2 और O निकल के वापस क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा ये? कॉपर बन जाएगा. Can you define the same process in the terms of loss of electron and gain of electron? What is loss of electron? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में कर पाते हो और डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड और व्हाट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड? नो? Look here now. You have the sodium, you have chlorine gas which exists in the form of Cl2. Chlorine monoatomic form में नहीं exist करता. It exists in the form of Cl2, right? And you must have heard of common salt which is NaCl. जैसे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनाया and you told me this is oxidation and this is reduction. Similarly, you have to tell me what is getting oxidized in this case and what is getting reduced in this case in terms of exchange of electrons. What is that? Like sodium is, what is atomic number of sodium? What is its configuration? 281, right? So it has strong tendency to lose one electron. See, if any element has this configuration 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288. So if any element has this configuration and last shell is having 1, 2 or 3 electrons, they tend to lose these electrons.
to form +1, +2, or +3 ion, which means that sodium will tend to lose one electron and form Na positive. Magnesium will tend to lose 2 electrons to form Mg2 positive. Aluminium will tend to lose 3 electrons and form Al3 positive. You must have done these ions also to make the formulas. Have you done these ions? Have you heard them? Have you used them in the formulas? Yes or no? Yes. So because they show these charges because they get fully filled shell, which makes them stable. So they tend to lose 1 electron to get stable. This tends to lose 2 electrons to get stable. This tends to lose 3 electrons to get stable. What about this one? It cannot lose or gain 4 electrons. It is very difficult. It does not have this much amount of energy in order to gain or lose 4 electrons. So it shares. And element with 5 valence electrons. Valence electrons means electrons in the last shell. That tends to gain 3 electrons and it acquires -3 charge. If it has 6 electrons in the last shell, that gains 2 electrons and acquires -2 charge. Electron with 7 electrons, its last shell, tends to gain 1 electron and gains -1 charge. All this is done to be stable, to have 8 electrons in last shells, which make them stable. If it gains 3, this becomes 8. Gains 2, this becomes 8. Gains 1, this becomes 8. Right? So this is the normal tendency of elements to show these charges on them. So silicon will share, but phosphorus will gain 3, sulfur will gain 2, chlorine will gain 1. These are called cations. Those carry positive charge, they are called cations. And those carry negative charge, they are called anions. Is this clear? Yes. Yes or no? Please, you can ask me again. Yes. Okay. So, what has sodium done to become Na positive? What has it done to do that? Is it loss of electron or gain of electron? Loss of electron. So loss of electron is called oxidation. Oxidation. And what has chlorine done to become Cl negative? Loss or gain? Gain. Gain of electron. So gain of electron is called reduction. So this is also a concept which you should be aware of while doing the redox reaction chapter. Now I was asking you about the processes which is involved in this reaction. Now can you tell me what is going on here? What is getting oxidized and what is getting reduced? What is getting oxidized? First tell me. Sodium. We did it just now, please. Sodium. Okay, who is Kushdeep Kaur? Kushdeep Kaur, 10A. Is she there? Kushdeep? Yes. Raise your hand, Kushdeep. I can't spot you. Amita. Can you answer me? What is getting oxidized here? Sodium. Why so? What is happening? क्या हो रहा है? क्या कर रहा है सोडियम? Redox. Redox तो पूरा कॉमन. See, redox is combination of two words. उसमें एक reduction. Loss of electron. Loss of electron. So what is a loss of electron called? What is that process called? Oxidation. Oxidation. Very good. And what is chlorine doing here? Reduction. Why? How is it reduction? कैसे पता चला आपको कि ये reduction हो रही है?
ऐसे ही सोचो कैसे आप बताओगे, याद नहीं करना है ना इसको। आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दे, आपको कैसे पता चलेगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? आपको कैसे पता चला, ये पूछ रही हूँ। ये तो मुझे भी पता है गेन हो रहा है, पर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? बोलो। चलो बैठो। Perneat from 10B. Perneat. Ma'am, yes. Yes, beta. Can you tell me what type of reaction is going on here? What is getting oxidized and what is getting reduced? Ma'am, Cl is reduction, gain of electron, Hmm. and Na is oxidation, loss of electron. Now, my question is, how can you identify that? आपको कैसे पता चला कि loss of electron हो रहा है यहाँ पर या gain of electron हो रहा है? आप reaction देख के कैसे बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, कौन दे रहा है ये भी नहीं दिख रहा, कौन दे रहा है ये भी नहीं दिख रहा, फिर आपने कैसे डिसाइड किया? याद किया सिर्फ, मैंने बोला पहले इसलिए आपने मान लिया, राइट? Yes. Okay, please sit. Okay, fine. Who can tell me how do you know that? How can you identify which species is getting oxidized? Anyone, you please. मैं चॉकलेट सेंड करूंगी अगर आप मुझे आंसर बताओगे तो। जो मुझे आंसर बताएगा, I'll send him or her chocolates. लड़कियां ज्यादा दिख रही है मुझे, कोई किसी को नहीं पता कि कैसे पता चलता है ऑक्सीडेशन कैसी होती है, तो तुम लोगों को मुझे चॉकलेट सेंड करनी पड़ेगी फिर, या तो बता दो कोई। ओके, आई एम काउंटिंग कितनी चॉकलेट्स आने वाली है मेरे लिए। नोबडी कैन टेल, नोबडी। अभी किया हमने कॉन्फ़िगरेशन से। We can get by the negative and positive sign available on the elements ions, that if it is losing or gaining electrons. ओके, who's this? Manik. सेम स्टूडेंट जिसने पहले आंसर किया था। फाइन, लिसन। आपको इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, आपको चेंज पता होना चाहिए। इस वाले सोडियम और इस वाले सोडियम में क्या डिफरेंस है? जब ये सोडियम अकेला है, किसी के साथ कंबाइन नहीं किया, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इट कैरी जीरो चार्ज। दिस सोडियम कैरीज जीरो चार्ज। जितने भी एलिमेंट्स हैं इन पीरियोडिक टेबल, ऑल ऑफ देम कैरी जीरो चार्ज जब वो अकेले हैं, because they contain same number of electrons which carry negative charge and same number of protons which carry positive charge. हर किसी एलिमेंट के पास सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल होता है। तो अगर कोई एलिमेंट अकेला है, किसी के साथ कंबाइन नहीं किया, एटम बोलते हैं उसको, आयन नहीं, ये एटम है, सोडियम जीरो चार्ज है। क्लोरीन यहाँ पर Cl2 के फॉर्म में है, क्योंकि क्लोरीन अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ऑल द गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, टू एटम्स टुगेदर। तो इनकी एग्जिस्टेंस ऐसे ही है, बट दे कैरी जीरो चार्ज। बट व्हेन दे फॉर्म NaCl, it is an ionic compound, right? Na carries positive charge and Cl carries negative charge. Ionic compound, NaCl, common salt, right? So if an element is changing its atomic number from 0 to 1, that is possible if it loses one electron. Electron पे
नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके पास प्रोटॉन तो सेम रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाता है। तो 11 पॉजिटिव and 10 negative. Ultimately, you will be left with one positive charge which shows here. तो ये Na से Na पॉजिटिव जब बना होगा, पॉजिटिव चार्ज तभी आया होगा जब उसने एक नेगेटिव चार्ज लूज किया होगा। 11 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन उसके पास बचे होंगे जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। This shows it has lost one electron and it will carry one positive charge, and loss of electron is called oxidation. This is what I was trying to ask you. कि आपने याद तो कर लिया, मैंने बताया तो आपने याद कर लिया, लेकिन मैंने एक सोडियम के लिए बताया था, किसी और एलिमेंट के लिए बताया तो कैसे करोगे? तो आप देखोगे जो एलिमेंट अकेला है एटम के फॉर्म में इट विल कैरी जीरो चार्ज, बट वंस इट इज कंबाइनिंग टू गिव यू कंपाउंड, उस कंपाउंड में आपने जो फॉर्मूला बनाना सीखे थे उसमें जो भी उस एलिमेंट पे चार्ज है, जितना चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है दैट मींस उसने उतने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। सोडियम पे 1 पॉजिटिव है दैट मींस इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव है दैट मींस इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। Aluminium पे 3 positive है, that means it has lost 3 electrons, and loss of electron is called oxidation. So all these species are getting oxidized by losing electron. सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगा के हटा के आप रिडॉक्स रिएक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, हायर क्लासेस में यही यूज होगा, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट क्लोरीन, ये जीरो है, ये जीरो से -1 बन रहा है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इसके पास आ रहा है। इसके पास 17 पॉजिटिव था, इट्स एटॉमिक नंबर है 17, सो इट कैरी 17 पॉजिटिव एंड 17 नेगेटिव चार्ज, दोनों बराबर है, ओवरऑल न्यूट्रल, जीरो चार्ज। बट Cl नेगेटिव मींस उसने 17 पॉजिटिव है लेकिन 18 नेगेटिव चार्ज है उसके पास, तभी एक एक्स्ट्रा नेगेटिव उसके ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, एक और तरीके से बताती हूँ। लाइक मेरे पास सोडियम है 281, मेरे पास क्लोरीन है 287, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ठीक है, तो ये रह जाएगा Na with 28। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो 1 पॉजिटिव आ जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो वो Cl नेगेटिव बन जाएगा। दिस इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर रहा है, खुद बन जा रहा है Na से Na पॉजिटिव, और क्लोरीन को बना रहा है Cl से Cl नेगेटिव। इधर वो कर रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर वो कर रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कुछ समझ आया? तो अभी मुझे बताना, फिर एक और मैं अगर आपको एग्जाम्पल देती हूँ। I have magnesium and oxygen and this gives me MgO. बैलेंस करने के लिए मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। Now you tell me what is getting oxidized and what is getting reduced. So tell me, मानिक को छोड़ के। प्रभजोत सिंह, who's प्रभजोत सिंह? हाँ जी बेटा, can you tell me what is getting oxidized? I can't hear you, बेटा.
Magnesium. Magnesium. How can you say that? कैसे पता चला आपको? It Yes. is a balanced reaction. Because It is a balanced reaction. बैलेंस तो मेरे को सारे ही करने पड़ेंगे, चाहे वो रिडॉक्स हो या ना हो, बैलेंस तो सारे करने पड़ते हैं. पर व्हाट इज ऑक्सीडेशन? Loss of electron. How do you know the magnesium is losing electron? बोलो, कैसे पता चलेगा कि मैग्नीशियम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन? Because it has a one valence electron and it is giving its electron to oxygen. ओके, वैसे मैग्नीशियम, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम? 12, So what would be the configuration? 282. So it will have two valence electrons, right? Yes. What is oxidation state or charge of magnesium in here at the reactant side? What is its charge? 2 positive. Not here, बेटा. जब वो अकेला atomic form में है, without combining with any other element, it carries zero charge. जब भी कोई element अकेला है, it carries zero charge, right? And what is charge on magnesium on the right hand side? 2. 2. 2 positive, right? So टू पॉजिटिव चार्ज उस पर तभी आ सकता है अगर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो उसके पास पहले 12 पॉजिटिव एंड 12 नेगेटिव चार्ज था, बट इफ इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो लूज करता है तो उसके पास बचते हैं 10 electrons. 12, ओ सॉरी, तो उसके पास बचते हैं 12 पॉजिटिव एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच गिव्स अस -2 चार्ज, +2 चार्ज, सॉरी, +2 चार्ज. ठीक है, 12 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे. एंड व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस? क्या बोलते हैं उसको? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. Oxidation. ठीक है, एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर? Oxygen. It has a 8 electrons. Okay, fine. What charge is it carrying in this state? 0. 0. Okay, atom molecule sub zero. And what charge is it carrying here? 2 negative. 2 negative. Very good. And how is it possible? Because it Because atomic number of oxygen is 8. So 8. configuration is 2 6. It needs 2 electrons so that it could have 8 electrons in its last shell, which makes it stable. So it tends to gain 2 electrons. So which element is giving it 2 electrons? This magnesium. ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देके खुद 2 पॉजिटिव कर लेता है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके उसको 2 नेगेटिव कर देता है. ठीक है, so this is getting reduced by accepting 2 electrons जो कि इसको मैग्नीशियम दे रहा है, and this process is called reduction. reduction. Very good. Please sit. Okay, one more question is, if you have aluminium and you have nitrogen, I'm not making the product. I would like any one of you to make the product and tell me the formula of the product formed. You have aluminium, you have nitrogen.
Who is Harman Singh? Harman. Are there two Harman? Yes. Harman, beta, what charge is aluminium carrying here on the left hand side, which I've made? And 3. जब 0. अकेला atom होता है, it carries no charge. It is carrying 0 charge here. But 3 positive वो तब carry करेगा जब वो combine करेगा किसी के साथ. ठीक है? अकेला है जब तक react नहीं किया है, neutral atom. And what is charge on N2? N2 0. जब अनकम्बाइंड फॉर्म में है ना कोई भी एटम या मॉलिक्यूल, इट कैरीज नो चार्ज. सो यू वर टेलिंग मी कि एल्यूमिनियम +3 चार्ज कैरी करेगा. कब करेगा? जब वो कंपाउंड बनाएगा. और नाइट्रोजन, व्हाट चार्ज डज नाइट्रोजन कैरी व्हेन इट कंबाइंस विद एनी एलिमेंट? नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? 3. 3 -3 + 3 -3. -3. Aluminium is 13. This is 283. It tends to lose 3 electrons. Nitrogen is 7. It is 25. It tends to gain 3 electrons. So aluminium will be 3 positive and nitrogen will be 3 negative. So what will be the formula of the compound formed? ALN. ALN. And which element is getting oxidized here and which element is getting reduced here? Same procedure है जो पिछले 2 examples में किया था बेटा. What is getting oxidized here? Full tell. Willingly तो कोई बोलना ही नहीं चाहता. Why is it so? Don't you know the answer? बोलो. Why do I have to call out your names every time? Ekam, what is getting oxidized in this case? Yes. What is getting oxidized in this case? Aluminium. क्यों? Aluminium has 3 positive charge. 3 positive charge, so it will lose 3 electrons and nitrogen will gain 3 electrons. What is nitrogen? Which process is it undergoing? Nitrogen. Nitrogen reduction. Reduction. It is gaining electron. Good. Sit. This is oxidation, loss of electron, and this is reduction, gain of electrons. Right? Come to your assignment. So, yes, I was telling you, we were on second question, and I was telling you that copper powder turns black upon heating due to formation of copper oxide. And which statement justifies the reverse reaction when hydrogen is passed through it? So on addition of hydrogen, this will get reduced to copper क्योंकि वो H2O निकल जाएगा और CuO से Cu बन जाएगा. Oxidation state की terms में कहना हो तो this is Cu2 positive and O पे 2 negative and यहाँ पर it is 0. So 2 positive से 0 तभी हो सकता है if it gains 2 electrons and gain of electrons is called reduction. Write it down. So copper oxide to copper. This conversion is process of reduction because oxidation state of copper is getting reduced from 2 positive to 0. Come to next question. In the reaction, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus water plus Cl2. Identify the oxidizing agent. What is oxidizing agent?
Tell me, do you know what is oxidizing agent? एजेंट होता है जो हेल्प करता है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द वन विच इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. और वो हेल्प कैसे करता है? खुद रिड्यूस होके कि ठीक है आप ऑक्सीडाइज हो जाओ, मैं रिड्यूस हो जाता हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगा ऑक्सीडाइज होने में. ठीक है. So for that you have to calculate the oxidation states here. Like oxidation state of manganese के लिए you have to put X for manganese. One oxygen carries -2 charge and you have two oxygens here. So this is equal to X minus 4 is equal to 0. X is equal to 4. So Mn is carrying +4 charge here. Oxygen का oxidation state is by default -2. ये जो D block के elements होते हैं, transition elements, they can change their oxidation state. So manganese is having different oxidation state in MnO2 and different in MnCl2. MnCl2 का oxidation state calculate करने के लिए put X for Mn -1 for chlorine and you have 2 atoms of chlorine. So this gives you X is equal to 2. That means oxidation state of manganese in MnCl2 is +2 and oxidation state of manganese is in MnO2 it's 4. Right? So change of oxidation state from +4 to +2. Is it oxidation or reduction? No. It will be done with the help of gain of electrons. Positive charge है ना? Electrons अगर आप लोगे 2 negative अगर आप इसमें add करोगे तभी ये +4 से +2 जाएगा. So addition of electron you have to do and addition of electron is called reduction. Getting reduced. Addition of electron. ठीक है. Gain of electron जिसको बोलते हैं. Loss of electron नहीं हो रहा, gain of electron हो रहा है. If you don't want to write addition, you can write gain of electrons. Because आपको +4 charge से +2 charge करना है, तो gain of electrons आपको करना पड़ेगा. And what is oxidation state of chlorine in HCl? What charge does H carry? No idea. H carries +1 charge. And what charge does chlorine carry? -1 when it is in combined form. So this is +1, this is -1. And what is the charge of Cl2? Any element in uncombined form, in atomic or molecular form that carries 0 charge. I've repeated this n number of times now. You need to remember this. So -1 से 0 पे जाने के लिए what it has to do? Gain electrons or lose electron? नेगेटिव चार्ज हटाना है आपको, 0 लाना है. तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? अब ये तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है. नहीं पता? इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज. तो यू add electron तो वो 2 negative बन जाएगा. तो you have to lose the electron and loss of electron is called Oxidation. So chlorine is getting oxidized here and manganese is getting reduced here. So आपसे पूछा है इसने oxidizing agent. तो अगर ये oxidize हो रहा है HCl से Cl2 बन रहा है, इस प्रोसेस में this MnO2 is helping this to get oxidized. जो प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको जो हेल्प कर रहा है, ये कैसे हेल्प कर रहा है? ये बोल रहा है यू लूज इलेक्ट्रॉन, आई विल गेन.
कि मैं तुमको ऑक्सीडेशन में हेल्प करूंगा, तुम ऑक्सीडाइज करो, तुम लूज करो इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन मैं गेन करूंगा। तो ये तरीका है उसका हेल्प करने का, इसको ऑक्सीडेशन में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान लूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द compound which gets reduced itself, and reducing agent is the compound which gets oxidized itself. आपने पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट? नो बोल दो अब। पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आता है HCl में? What charge does hydrogen carry in HCl? Positive. What is charge on H2? Zero. Charge on Cl2? Zero. What is the process called if any element gains electron? Reduction. What if it loses electron? Oxidation. What is oxidizing agent? Other and reduce itself. Which reduces itself, which helps in oxidation by reducing itself. Right? Come to next question. So answer for this was MnO2. MnO2 is the oxidizing agent here. Next, which of the following reactions represents oxidation of metallic element? Give me the answer for fourth question. Oxidation of metallic element. Metal ढूंढो and then look for addition of oxygen in it. Answer is third one. Sodium is a metal and you're adding oxygen to it. You're getting it oxidized. Fifth one, rancidity in food is caused due to Oxidation of fats and oils. Okay, B answer. Which of the following is a sign that food has turned rancid? The food develops an unpleasant smell and taste. Okay, come to assertion reason first. Come to 11th question. In a reaction, CuO plus H2 gives Cu plus H2O. CuO is reduced. Is it true? Yes. Yes. Okay, second statement says reduction is gain of oxygen. Is this true? False. You answer C. Assertion is true, but reason is false. 12th question. Rusting is an example of redox reaction. Is it true? True. True. Isn't it? It is. It is. Rust पता है कैसे बनती है? आयरन है, ऑक्सीजन है, and rust is Fe2O3. आयरन 0 से +3, oxygen 0 से -2. This is oxidation, this is reduction, right? Increase and decrease in oxidation state. So, rusting of iron is a redox reaction. And second statement is during rusting, yes, yeah. Iron loses electron and oxygen is gaining electron. So this is A. 13th question. Passing hydrogen gas over heated copper oxide reduces it to brown copper metal. CuO से H2 पास करोगे तो अभी जो पहले किया था वही है, ये वही वाला क्वेश्चन है, बस assertion reason के फॉर्म में है. तो दिस इज ट्रू. उसमें से वो Cu बना दिया था उसने, इसमें रिएक्शन भी होगा. We are talking about this reaction only. And passing hydrogen gas over heated, Hanji.
first period is started. Okay, beta ji. Thank you. But please do be next time के लिए and complete your assignment. Doubts लेके आना. If you don't know the things, you better ask me, beta. ठीक है? Thank you so much. Very good morning, ma'am. Very good morning, students. Good morning, sir. Ma'am, today there is only one section. Ma'am, can you hear me? Sir, yes. There is only one section joined today. Sir, no. They are joining. Okay. Right. Yes. चलिए मैं पूछ लेता हूँ बेटा. अर्शप्रीत कौर 10A. अर्शप्रीत कौर. Is Arshpreet there? आप बताइए बेटा फ्रंट बेंच पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं. प्लीज यू टेल मी. Sir, yes. Sir, zeros is the value of x. What is the relation between the zeros and coefficients? Sum of zeros and product of zeros. Yeah, what is the sum of zeros? Sir, minus b upon a. Minus b upon a. Right. And what is b and a? Sir, coefficient of x. B is coefficient of x and a is? Coefficient of x square. Very good. What is the product of zeros? C upon a. C upon a, where c is? A constant term. Constant term. Very good, beta. Please sit down. Now, section B, front bench students. Yes, set a line. Please tell me if you have sum and product of a product of a polynomial, zeros of polynomial, then how can you form the polynomial? So by using general form of quadratic polynomial, What is that formula? x square Mhm. minus Mhm. sum of zeros Right. multiply x plus product of zeros. Plus product of zeros, right? Please sit down. Very good, bache. So this is the formula for finding the polynomial, quadratic polynomial, if sum and product of the zeros is given. Now, have you drawn the graphs also? Have you drawn the graphs also, students? Graphs of polynomials. Yes or no? And students, who will tell? Yes. Gurkirat Singh, 10A. Gurkirat. Please come, bache. Sir, accent. Okay. Harshdeep. Harshdeep.
Please come fast. Ma'am, please make sure whom I am calling. Please come and answer the question. Sir, which Harshdeep Singh or Harshdeep Kataria? Harshdeep Kataria. Yes, student. Harshdeep, please tell me what is the shape of the graph of a quadratic polynomial? Sir, what? बेटा ग्राफ ड्रॉ किए थे आपने? Sir, yes, sir. अच्छा, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ ड्रॉ किए थे? Yes, sir. कि अच्छा, कौन कौन से पॉलिनोमियल्स के किए थे बेटा? मेरी तरफ देख के बताओ, मैम की तरफ नहीं, मेरी तरफ देख के। हाँ जी बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, बताएंगे आप मुझे? हाँ जी, व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? यस और नो? बच्चे यस और नो आता है या नहीं आता है? sir, no. प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट। सेक्शन सी ज्वाइन। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट किरण जोत कौर फ्रॉम 10B। किरण जोत कौर फ्रॉम 10B। Absent. एब्सेंट है। दीपिका कटारिया। टेल मी बेटा, व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? The highest degree of variable is 1. Very good. And what is a quadratic polynomial? Highest degree of variable is 2. Right. What is the shape of the graph of linear polynomial? Yes. Straight. Straight means? Tell me, what is straight? What is the meaning of straight? Is it straight line, straight curve? What is it? Straight line. Straight line, right? Is Yes. this clear? Yes. How many zeros a linear polynomial can have? Sir, 1. One. Not less than one or greater than one? Sir, no. No. Yeah. Is she correct? A linear polynomial can have only one zero. So it can also have 0. The definition of zero is a polynomial. If we sit down, if we say linear polynomial, it can have at the most one zero, right? When you say quadratic polynomial, it can have at the most two zeros. Let me explain you. See, let me take these different graphs. If you look at this graph, how many zeros this polynomial have? One is this, another is how many zeros this polynomial have? 1. One. How many zeros this polynomial have? First of all, tell me whether this is a polynomial or not. Is this a polynomial or not? Yes or no? Yes. Yes. How you come to know that this is a polynomial? Tell me. Beta, the shape. What is the shape of a quadratic polynomial? Parabola. This is a parabola, na? Right? Now the difference is this parabola is opening downward. Means दो तरह के parabolas होते हैं बच्चे, एक तो upward opening, एक downward opening, right?
Is this clear? दो तरह के और होते हैं but they are not the part of your syllabus. Left opening और right opening, ठीक है? So अगर ये upward opening है या downward opening है, then also it is a parabola. Is this clear? ठीक है? It has no zeros. अच्छा, ये जो ग्राफ है ये सेपरेट ग्राफ है, ये सेपरेट है, दोनों इकट्ठे नहीं है. अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर और मीनिंग चेंज हो जाएगा. सो टेक देम सेपरेटली. Is this clear बच्चे? ये अलग ग्राफ है, ये अलग है, राइट? अगर मैं ये वाला ग्राफ ले रहा हूं तो वो अलग है, ठीक है? Now this graph has no zeros, right? So these all are the graph of a quadratic polynomial. So hence we can conclude that a quadratic polynomial can have at the most two zeros. बच्चे कहते हैं कि दो zeros हैं. No, it can have less than also. पर दो से ज्यादा नहीं हो सकते बच्चे. Is this clear? Yes. Right? So now, so these two things are there in this topic. Sum of the zeros, product of the zeros, and how the forming the equation by using sum and product. So everyone has got the assignment. Everyone got the assignment? Yes or no? Yes. Okay. We have done some question from this assignment, students. Yes. Are the questions clear to you people or not? Because when we have done that assignment, I think you have not done this topic. What you want? Shall I repeat these questions or shall we move forward from the questions? where Move forward. we have done till which question? Sir, till 15. 15 we have done. So now we'll be doing 16 question. Now student, you will be able to understand most of the question. Find the quadratic polynomial with its zeros minus 3 and 4. Now zeros are given to you. So you have to form the quadratic polynomial. Please try this question. Everyone, last benchers. सबसे पहले मैंने आपको ही बुलाना है बेटा. Please be ready with your solution. It is one of the easiest question and every CBSE board paper has this type of question, right? Whether in the form of MCQ or some other form. Done. Teachers, please make sure that everyone complete the question. See, first of all, you need to understand the question. यहाँ पे बच्चे आप लोगों को zeros given है. You have to form the polynomial. First of all, you are supposed to find out the sum and product of the zeros. How to find out the sum? Just add both the zeros. What is the sum, student? 1. Sum is 1. What is the product? Minus 12. Right. So what will be the quadratic polynomial? X square minus 1x minus 12. Minus s. What is the value of s? 1 into x plus value of p. Right, students? So this will be the polynomial. Now, student, just go back to the question number 8. Just go back to the question number 8. आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे. Yes. Now tell me, both the question are same, 8 and 16. Yes. Only the formation is different. Now tell me what is the right answer in question 8. C. C. How you can say it is C? आपका तो आंसर बेटा आ रहा है x square minus x minus 12. Common. What is common? 2. 2 common. Right? If you take 2 common from this, what you are left with? X square upon 2. Is this clear, students? Yes. Therefore, you got this polynomial, right? Now,
This is the one way of forming the polynomial. Do you know some other way also? If the zeros are given, can you form its polynomial by some other way also? Yes or no? Yes, student, yes or no? Can anybody tell me how? See, these are the zeros given. What is the meaning of this? The x can have value -3 and x can have value 4. 4. If you take 3 on this side, what it becomes? And here, if you take 4 on this side, what it becomes? Is this clear? Yes or no? Sir, yes. You take these two linear polynomials and take their products, then also the result will be the same. करके देखो सॉल्व बेटा, सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? Sir, yes. ये आ रहा है बच्चे? How it is possible? See, when we say the zeros of the polynomial, so what is the meaning of this? Now, the meaning is that it has two zeros. One is -3, another is 4. Yes or no? The meaning of zero is that the value of x is -3. When you put x as -3, this polynomial become equal to 0. The value of polynomial becomes 0. Right? So its meaning is x equal to -3 and also x is equal to 4. So you have formed the linear polynomial and taken their product. That will also result into the same thing. Even अगर आप बच्चे इसके splitting the middle term करते हो, then also you reach to this result. जब आप splitting करते हो तब भी बेटा यही आंसर आता है ना आपका? Yes or no? So they are opposite of each other. Is this clear? So we move to the next question. Question number 17, बच्चों. If 1, 0 of the quadratic polynomial is given, x square plus p plus 1, x minus 6 is 2. If 1, 0 is 2, then what is the value of p? हो जाएगा students ये question? Yes. Very simple. When we are saying it is 0, can we write this as px? You just have to do one thing. What you have to do? What you have to do, students, in this? Of zeros. Put x is equal to 2 and then make polynomial equal to 0. 0. You will get the value of p. Please do, everyone. And the student done? P is equal to 0. P is equal to 0. How many of you have got p equal to 0? And the student 10th B, extreme left, second bench. Girl students, please come. Anji. 10th B, yes. Please come and explain me the question, बच्चे. Anji, have you completed?
p की वैल्यू 0 आ जाएगी। Please explain me how you have done it. सर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वो तो लिख दिया मैंने, x स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6। नाउ सो x की वैल्यू की जगह 2 का स्क्वायर x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, 2 स्क्वायर प्लस p प्लस 1 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू, इसको 0 के इक्वल कर दिया जी। 2 टू ज़ा 4 प्लस 2p प्लस 2, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। व्हाट यू गॉट 2p प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 0। 4 प्लस 2 6, 2 6 6 कैंसिल हो गए बच्चे, तो 2p 2p इज इक्वल टू 0। एवरीवन हैज गॉट द सेम आंसर। बच्चों ने कर लिया बेटा? एवरीवन कंप्लीटेड और नॉट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्वेश्चन में, प्लीज आस्क। आई होप काफी लोगों को क्लियर नहीं होगा ये क्वेश्चन। माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आस्क योर डाउट्स। मैम प्लीज मेक श्योर दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इफ एनीवन हैज सम डाउट्स, प्लीज आस्क देम टू आस्क द क्वेश्चंस। Right students, so we move to the next question if you don't have any doubt. Next question is students 18th question. Now the question is, sum of the zeros is given to you. If sum of the zeros of the quadratic polynomial is 3. Student, very important thing is you need to understand the question properly. Question की जो language होती है ना बेटा इंग्लिश की, देखिए if the sum of the zeros of the quadratic polynomial is 3. So connection क्या है? Sum is 3, right? So you should know that the sum is given. What is the quadratic polynomial? 3x square minus kx, kx plus 6। right? Now students, Parneet from section B, please come forward. Have you read the question, beta? Sir, yes. Have you understood Sir, yes. what we have to do in this question? Sir, firstly we have to compare with ax square plus bx plus c is equals to 0. Right, we have to compare with ax square plus bx plus c plus c. Sir, then the value of a is 3 and Right, then value of b is equals to minus k. very good, C is equals to 6. very good. Now Sir, now sum Naji, sum of 0 is equals to minus p upon a. right, Sir, s is equals to minus k upon 3 minus k plus k आ जाएगा. बस के आ जाएगा। Yes. I So the value of p is equals to minus k, then good. And then sir, product of 0 c upon a. okay, product of 0 c upon a. हाँ जी, अरे उनसे मत पूछो बेटा, मेरे से पूछो अगर डाउट है। That second bench student, please keep quiet. Let she answer the question. हाँ जी बेटा बोलिए। Sir, 6 upon 3. 6 upon 3, very good. सर फिर ये इसकी कटिंग हो जाएगी। हाँ बिट्टू आ गया, आप क्या करें? अब क्या किया जाए बेटा? What we have to find out? क्या फाइंड क्या करना है बेटा हमें यहाँ पे? सर के तो के कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए आपको सम ऑलरेडी 3 गिवन है और आपने सम निकाल लिया k by 3, तो दोनों चीजें सेम है ना ये? सर यस। दोनों को इक्वेट कर दे बेटा, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी हमें p की ना यहाँ पे। तो k by 3 इक्वल टू 3, so k is equal to 9. so 9 is the right answer, right? Everyone understood? Please sit down beta.
सभी बच्चों को क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, राइट? आपके पास सम निकालने का एक मेथड है ये वाला बेटा, और एक ऑलरेडी सम गिवन है, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। इज दिस क्लियर? यस और नो? Sir, yes. Right. We move to the next question, student. Question number 19. Let me explain better this type of question first. एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ये वाला, very important type of questions. If alpha beta are the zero of the polynomial and polynomial is given fx is equal to, it has been given that alpha and beta are the zeros. Now what will be the sum of the zeros? What is the sum of the zeros? That is alpha plus beta. What will be sum of the zeros here? -1. कंपेयर करते हैं बेटा, तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b is also 1, c is also 1. Now what will be the sum of the zeros? -1. Minus of 1 upon 1, that is -1. What will be the product of the zeros? Alpha multiplied c upon a, that is 1 upon 1, it will be equal to 1. 1. Now आपके पास दो वैल्यूज आ गई बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज -1 एंड अल्फा बीटा इज, यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों को? No. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? 1 on alpha हाउ टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू? व्हाट वी शैल डू हियर? शैल वी टेक इट्स एलसीएम? Yes. व्हाट विल बी देयर इन द न्यूमरेटर? alpha plus Beta. Alpha plus beta. Very good, students. What is the value of alpha plus beta? -1. The value of alpha beta 1. उत्तर आ जाएगा। -1. Is this clear? Yes. Anything not clear? Very good, students. Now we move to the question number 20. It's a fill up. If product of two zeros of a dash is the relation between a and, yes, yes, what will be the fill up here, students? If product of two zeros of a, if नहीं आना चाहिए बच्चों यहाँ पे ना क्वेश्चन में, if कट कर दीजिए, product of two zeros of a quadratic polynomial is the relation between, हाँ जी बच्चे, product of two zeros of a quadratic polynomial is the relation between a and c, right? Is this clear? क्या होता है बेटा प्रोडक्ट? What is the product? C upon A. फर्स्ट फिलअप्स में क्या आएगा? Quadratic. Polynomial is the relation between a and c. Is this clear? Now come to the next question. Question number 21. If product of two zeros ax square plus bx plus c is 1, then what is the relation between a and c? Please try this question, students. Product is given to you 1, right? Product is given 1. Question number 21. Right? So we have to find the relation between A and C. C by A is equal to C. A equal to C. Very good, students. C product is equal to C upon A. That means C upon A is equal to 1. first multiply किया तो C is equal to. A. Is this clear? Is this clear, बच्चों? Yes. Yes. Next question.
Question number 22. Form a quadratic polynomial whose zeros are. अब आपको यहाँ पे दो zeros given है जी. What are zeros? 2 plus root 3. Another is you have to minus under root 3. find quadratic polynomial whose zeros are these. How to do this question, students? Who will explain me? कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा इसको कैसे करना है? हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 16. तो दिस क्वेश्चन एंड 16 आर सेम. यस और नो? ठीक है, तो सेम वे से कीजिए बेटा इसको. फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द जीरोस एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड देन अप्लाई द फार्मूला x स्क्वायर माइनस sx प्लस p. हो जाएगा बच्चों? Yes or no? Yes. Please do it. Sudden. हाँ जी बच्चे, आपका हो गया 10th ए फ्रंट बेंच. सेकंड स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड. मेरे लेफ्ट से सेकंड. नहीं, ये स्पेक्स गर्ल. हाँ जी, हाँ जी, आप खड़े हो जाइए बेटा. यस. हैव यू डन इट? Value of a 1. Yes. यस. टेल मी व्हाट यू हैव डन बेटा. Sir, firstly we have to find the sum of zeros. What is the sum? Sum बेटा, you have taken this plus 2 minus under root 3. Sir, 3 under root 3 cancel हो जाएगा. right. It gives us 4. Right. Then product. And now we have to find product of zeros. Right. This is the product. How to solve this? सर हमने इसके साथ आइडेंटिटी लगाएंगे. इसके साथ आइडेंटिटी लगेगी. a plus b and a minus b is equals to a square minus b square. Right. So student, यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी लगाई है a square minus b square which is equal to Minus b. तो अब हमें इस फॉर्म में गिवन है प्रोडक्ट. So we have to convert into this form. So what is a here? 2. So 2 square minus Under root 3 square which is equal to 2 2s are 4. What is minus 3. the 3? Yes. What is the square of under root 3? 1. Square Sir, of under root 3. 4 minus 3. 4 minus 3 My gives question. us 1. You are right, but understand the question. My question was, what is the square of under root 3? So answer is 3. Square जब root 3 into root 3 करते हैं तो आंसर आ जाता है 1. आंसर आ जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है तो we will get 3. तो 4 minus 3 equal to 1. So आपके पास s की वैल्यू आ गई 4, p की वैल्यू आ गई 1. 1. The polynomial now. Sir, we have to apply the formula of x square plus sx plus p Plus sx होता है. फार्मूला क्या होता है? minus xx plus p. Minus sx, right? So minus into s is 4 plus p. Is this clear, students? Yes or no? ਕੋਈ doubt? Please sit down. Now we move to the next question, students. Question number 23. Find the value of a if one of the zeros of the polynomial is reciprocal of the other. See, students, how to do this question. What is the meaning of reciprocal? See, if one of the zeros, let's say one of the zeros is alpha, then what will be the next zero? 1 by alpha. Now, what concept we'll use here? अगर एक zero alpha है, second zero is 1 by alpha. So which concept we should utilize here? Tell me क्या करें अब?
प्रोडक्ट ले लेते हैं जीरोस का, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज अल्फा multiplied by 1 by alpha. So what is the product? 1. We have product as 1. Now we can find the product from the polynomial also. Yes. So what is the polynomial? A square plus 1 x square plus 56x. 56x plus 2a Right. So from here, what will be the product? minus. What will be the product? C by A. Yes or no? Yes. What is the constant term here? 2a. अगर आप बच्चे इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम एक काम करते हैं यहाँ पे ना ax स्क्वायर bx स्क्वायर को ना कैपिटल में लिख देते हैं बच्चे. We can take this as ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी a is there. So now what will be the product here? Capital C upon a. और what is the value of c? Value of capital A is B is 56 and C is 2A. So we have applied C upon A. So C is 2A and A is A square plus 1. Now make this equal to 1 because we have find out 1. So अब इसको solve कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए. हो गया ये नोट डाउन बच्चों? ये नोट डाउन हो गया जी? तो इसको जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? व्हाट यू विल गेट हियर? टू ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1. नाउ हाउ टू सॉल्व इट? 2a is equal to a square plus 1. How to you solve this? क्या किया जाए बच्चों? अब कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड्स. कौन बता रहा है? मैं पूछ लेता हूँ बुला के बच्चे. चलिए सेक्शन सी से नवनीत कौर. वेयर इज नवनीत? प्लीज कम बेटा. यस टेल मी बच्चे हाउ टू सॉल्व दिस. बेटा माइक ऑन कीजिए, माइक को अपने माउथ के पास लेके आइए सो दैट. हाँ जी, हाउ टू यूज दिस, हाउ टू सॉल्व दिस? Sir, by cross multiplication. तो कर दिया मैंने, ये आ गया 2a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू? टेल मी बेटा. सिट डाउन. हु विल एक्सप्लेन मी? आ जाओ बच्चे, आप आ जाओ. 10th ए से जो लास्ट वाले स्टूडेंट है, दोनों आ जाओ आप. लास्ट बेंच जो अभी खड़े होके बैठे हैं ना, दोनों आ जाओ. प्लीज कम बोथ ऑफ यू. हाँ जी बच्चे, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? माइक ले लो बेटा हाथ में और बताइए कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं. यस सर. क्वेश्चन वी आर डूइंग. सर माइनस शिफ्ट हो जाएगा. बेटा मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम? असाइनमेंट में नंबर देख के बताओ जरा. सर क्वेश्चन नंबर 23. वेरी गुड. हाँ जी, तो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? 2a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1. सर बोलो. साथ वाले को दे दो बेटा माइक. साथ वाले बच्चे को दे दो माइक. कैन यू हियर? आइडेंटिटी लगेगी सर, आइडेंटिटी. अच्छा, कौन से वाली? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ए माइनस बी. साथ वाले बच्चे को दे दो अब माइक में. साथ वाले बच्चे को माइक दे दो बेटा. हाँ जी जी, करेक्ट बेटा, सही बोल रहा था ये.
यस और नो? नो। नो, तो आप करेक्ट कर दो इसको। बेटा बोलो यस और नो, आता है नहीं आता? सर सीधा नो। बैठ जाइए। हाँ जी बेटा, कौन बताएगा ये? प्लीज रेज योर हैंड। सर आइडेंटिटी लगेगी कौन से वाली? a माइनस बी होल स्क्वायर। कैसे लगेगी बेटा? सर a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसपोजिशनिंग ऑफ दिस, राइट? सबसे पहले तो आपको टर्म उधर लेके आनी है। ये तो बताया नहीं आपने, आइडेंटिटी तो उसके बाद लगेगी ना। आप चाहो तो आइडेंटिटी लगा सकते हो, चाहो तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हो, राइट? यू कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म आल्सो। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं क्लिक कर रही है कि आइडेंटिटी कैसे लगेगी, अगर आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हो बच्चे, ये हो जाएगा। क्योंकि आपको सम -2 चाहिए और प्रोडक्ट 1 चाहिए, तो -1 इंटू -1, राइट? सो व्हाट दिस बिकम्स, ये कॉमन आया, a -1 कॉमन, a -1। सो आपके फैक्टर बन गए बच्चों a -1 इंटू a -1 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी आल्सो, राइट? तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1। आप आइडेंटिटी बोल रहे थे, आइडेंटिटी भी लगा सकते हो बेटा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो यहाँ से भी बेटा सेम चीज आ रही है, राइट? तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, राइट जी? Sir, our second period has started. क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? इज दिस क्वेश्चन क्लियर और नॉट? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टीचर्स फॉर योर कोऑपरेशन।